So as we wait for them, I would just like to walk you through the agenda once. Essentially what we're going to do is हमने पिछले साल एक छोटी सी रिसर्च की थी. Actually छोटी रिसर्च तो नहीं थी. It was actually I think a 6-month long process where we were working on a needs assessment uh, for media startups and entrepreneurial journalists. And the research is still ongoing in a way, but हमने सर्वे की जो फाइंडिंग्स हैं आज एक तो वो प्रेजेंट करेंगे, then we'll share some talking points about it, some insights. We'll take your feedback on it. I think Arslan has also joined us. Just give me a second. Arslan साहब, अस्सलाम वालेकुम. आवाज आ रही है आपको? अरसलान साहब, अस्सलाम वालेकुम. आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है. आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है. ओके जी. अस्सलाम वालेकुम सलाम. अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन. अस्सलाम वालेकुम जी. हां भैया, हम फाइन जी. आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? भाई साहब आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू. स्टार्ट करें फिर? आई गेस वी शुड स्टार्ट, जी राइट? मेरा ख्याल है शुरू कर लें. Okay. So I was just introducing the research that we were working on. Everybody, you can see the screen that I've shared, right? Yes. जी मॉस. So पिछले साल हमने एक इवेंट करवाया था जिसका नाम मीडिया हैक था. It was a hackathon for sustainable media startups, for media viability and sustainability. उसमें 29 startups from all across Pakistan हमने उनकी pitches को क्या कहते हैं उनकी पिचेस पे काम करके एक हैकेथॉन स्टाइल इवेंट था for 5 days. And then 4 startups were given grant money and a 3-month long mentorship support program. And this research that I am introducing was ongoing before that. और वो needs assessment इस research का मकसद था for entrepreneurial journalists, for digital media startups, for regional media, and also for media that was run by individuals. So I will not take any more time and I will start presenting the findings of research. इस research के जो objectives थे, सबसे पहले तो ये कि existing challenges and opportunities for financial diversification and viability of large, medium and small mainstream media. इसमें जो इस तरह से bifurcations हैं in terms of इनके जो sizes हैं. I'm sorry, किसी एक की आप में से किसी एक की माइक में से आवाज आ रही है. If everybody would mute. अरसान साहब, I think आपका था. Thank you. Thank you so much. So एक तो ये कि mapping existing challenges and opportunities for financial diversification and viability of large, medium and small mainstream media outlets. अब इसमें media outlets की bifurcation हमने किस तरह की हुई थी, I'll talk about that in a minute. And then the same opportunities and challenges for sustainability and diversification of digital only media outlets. ये दो हमारे बुनियादी जो इसके research objectives थे वो हैं. और इसमें जो methodology थी, एक तो ये कि हमने एक survey tool design किया था जो कि मीडिया स्टेक होल्डर्स जो थे हमारे इन डिफरेंट रीजन्स हमने उनमें शेयर किया था. और 155 एडिटर्स, जर्नलिस्ट्स और रिपोर्टर्स, इसमें मीडिया मैनेजर्स भी शामिल हैं, इसमें स्टार्टअप्स के जो फाउंडर्स हैं वो भी शामिल हैं, इसमें न्यूज़ एडिटर्स भी शामिल हैं, डायरेक्टर न्यूज़ भी शामिल हैं, इसमें इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी शामिल हैं जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया था. तो इट वाज अ वेरी वाइब्रेंट मिक्स ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे. I think now would be a good time to talk about the different stakeholders that we engaged in when we were designing the research. एक तो ये कि ये जो 155 लोग थे जिन्होंने रिसर्च में पार्टिसिपेट किया था, these stakeholders were identified in a previous stage of the project. हमने अलग-अलग regions में focal persons को identify करके उनके थ्रू एक मैपिंग करवाई थी जिसमें तकरीबन 400 से ज़्यादा एंट्रीज अलग-अलग रीजन से हमने ली थी, इंक्लूडिंग जीबी, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, बलूचिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद, सिंध एंड केपीके. और 400 में से फिर 150 लोगों ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया था. अब इसमें 3 बुनियादी कैटेगरीज थी. एक तो सबसे पहले व्हाट वी आइडेंटिफाइड एज रीजनल मीडिया. रीजनल मीडिया में बेसिकली वो इदारे शामिल हैं जो
या तो नेशनल स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं या डिजिटली ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी जो उनकी ब्रांडिंग है या जो उनकी बुनियादी आप कह लें जो एक सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि वो किसी एक रीजन को या तो आइडेंटिफाई करते हैं एक रीजन के साथ, या किसी एक मखसूस जुबान के साथ, किसी एक वर्नैक्युलर के साथ, या किसी एक कम्युनिटी के साथ. So that was the first kind of media outlet that participated in the research was regional media outlets. Number two, जिसको हम कहते हैं डिजिटल मीडिया आउटलेट्स, जिसमें माती टीवी शामिल है, जिसमें टीसीएम शामिल है, जिसमें लोक सुजाग शामिल है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इस तरह के मीडिया आउटलेट्स थे. एंड नंबर थ्री, इंडिविजुअल लेड आउटलेट्स. इसमें आप जिस तरह नया दौर है जो कि एक जिस तरह रजा रूमी साहब का एक वो इंडिविजुअल लेड मीडिया आउटलेट है नया दौर, या जिस तरह मतीउल्लाह जान है उनकी प्रैक्टिस है एज एन इंडिविजुअल जर्नलिस्ट, इसमें इंडिविजुअल जर्नलिस्ट दमसेल्व्स जो उनकी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसेस थी वो भी शामिल थी, या जिस तरह जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, अगर किसी एक जर्नलिस्ट ने किसी एक इंडिविजुअल जर्नलिस्ट ने अगर कोई इदारा शुरू किया है, कोई स्टार्टअप शुरू किया है, तो वो भी इसमें शामिल था. तो ये वो तीन bifurcations थी of the research outlets that participated, sorry, of the media outlets that participated in the research. और for the survey that I'm going to present, इसमें ये 155 outlets थे जिनके भी हम findings present करूंगा. For the qualitative research, we had semi-structured interviews, जिनमें बहुत actually industry के senior लोग बहुत शामिल थे, editors शामिल थे, business side से मार्केटिंग डायरेक्टर जंग थे सरमद अली साहब, वो शामिल थे. ये कुछ नाम है एक्चुअली उन लोगों के जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था. अगेन यू विल सी दैट इन टर्म्स ऑफ एज ग्रुप, इन टर्म्स ऑफ मतलब अबसार आलम साहब पेमरा के फॉर्मर चेयरमैन इसमें शामिल थे, और बदर आलम साहब इसमें शामिल थे. सहर हबीब गाजी एडिटर वाइस वाज आल्सो पार्ट ऑफ द रिसर्च. Then we also took some younger independent journalists who are running their own startups, such as Risham Wasim from Mati TV and Sama Akhtar from Propaganda. Manzar Ilahi was in the research. He's the digital editor for Geo, etc., etc. Asad Ali Toor साहब देखें वो एक independent journalist हैं. He was also part of the research. So the idea for the research is कि existing challenges और opportunities को की मद्देनजर हम नीड्स को असेस कर सकें, नीड्स फॉर सस्टेनेबल डिजिटल मीडिया स्टार्टअप्स. अब ये जो 155 रिस्पॉन्सेज हमें मिले हैं उसमें से 12% वर इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट्स, 48% वर रीजनल मीडिया आउटलेट्स एंड 40% वर डिजिटल ओनली. अब ये रीजनल मीडिया की फाइंडिंग से मैं शुरू करूंगा. सो इनसे पूछा गया कि हाउ वुड यू रेट द फॉलोइंग गवर्नमेंट पॉलिसीज. इसमें पॉलिसीज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल मीडिया शामिल है, इसमें डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज शामिल हैं, इसमें टैक्सेशन ऑफ मीडिया इक्विपमेंट शामिल है, और इसमें कंटेंट रेगुलेशन की पॉलिसीज शामिल हैं. अब विद इन रीजनल मीडिया ये जो रिस्पॉन्सेज हमें मिले हैं, ये जो जिन जिन रिस्पॉन्सेज आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, इनमें से तकरीबन 1/4 वर फ्रॉम पंजाब, तकरीबन 17% वर फ्रॉम सिंध, 8% केपीके के थे, 8% in KP and GB, 6% in Balochistan and 5.3 in Azad Jammu and Kashmir. एंड आप देखें ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ हैं उनमें जो ऑरेंज वाला आपका पोर वाला ग्राफ है वो आपको सबसे ऊंचा नज़र आएगा. और अब डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज़ वी कैन सी दैट पीपल फील लाइक डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज़ आर द लीस्ट that they can rate as good. Taxation is a little polarizing, and so is policies for registration of digital media. I think सबसे consistent जो एक रिस्पॉन्स का ट्रेंड है वो कंटेंट रेगुलेशन में है, कि कुछ जितने लोगों को लगा कि वो पुअर है, तकरीबन उतनों को ही लगा कि वो अच्छा या एवरेज है. So when asked if they thought there was an enabling environment for regional media to diversify and scale their operations, and this is very interesting, that more than half of the people who were part of the research, they believe that Pakistan के media environment जो है वो उनको enable करता है to diversify and scale their operations. And when asked if they had actually introduced any alternate revenue generation sources or experimented with diversification of revenue generation mechanisms, almost half of them said that either they have not been successful in doing so or they have not introduced any revenue generation schemes.
अब मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जनरेशन में आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं दे टेक द लायंस शेयर मोर देन 50% ऑफ people in regional media have cited advertisements as their primary source of revenue. Uh, YouTube, we think YouTube is, we think YouTube is big. We think everybody's channel is monetized, and we feel like एक दफा आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए तो वो आप सस्टेनेबिलिटी की बात करना शुरू कर देते हैं. एसेंशली दिस इज ऑल्सो बिन वन ऑफ आवर की लर्निंग्स इन द पास्ट ईयर वर्किंग ऑन दिस, दैट जब आप सहाफियों से पूछते हैं कि आपके लिए सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है या सस्टेनेबल प्रैक्टिस का मतलब क्या है, तो वो कहते हैं कि बस हमारे चैनल्स जो है वो मोनेटाइज होने चाहिए, regardless of how consistently they're posting, regardless of the fact that do they even have any consistent strong business identities or business strategies. But despite that, interestingly, we see that YouTube makes up for one of the smallest revenue generation sources, and advertisement takes most of the share. Which other sources are you currently using to generate income? Less than 20% said that they were successfully generating revenue from that. सॉरी, मैं इंटरप्ट कर सकता हूँ? जी प्लीज सर. अच्छा, ये जो जब आप एडवर्टीजमेंट कह रहे हैं तो कैन यू प्लीज स्पेसिफाई कि एडवर्टीजमेंट क्या मतलब? एक तो यूट्यूब और जो मोनेटाइज चैनल्स पे जो प्लेटफॉर्म्स के एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वो होती हैं, ये कौन सी एडवर्टीजमेंट्स हैं? देखें, and I'll talk about this more in a subsequent part of the research. Lekin essentially, one of the key differences that we pointed out from the research between regional media outlets and digital outlets was कि independent इदारे जो हैं या जो digital इदारे हैं वो they rely on social media या they rely on YouTube as their primary channels. That's where they need their audiences to be. लेकिन regional जो इदारे हैं, for example Pamir Times, they actually move their audiences to their own channels, to their own websites, और वहां पे फिर उन्होंने local partnerships के through advertisements वो sell करते हैं. It could be for small businesses, it could be for other journalists, it could be for independent maybe organizations. I hope that answers your question, but we will talk about this more in subsequent part of the research also. तो अब ये जो आपकी रीजनल मीडिया में less than 20% said that they were successfully generating revenue from diversified alternate mechanisms other than sponsorships, YouTube and ad sales. Essentially, इस रिसर्च का मकसद भी ये है, जो हमारी एक की फाइंडिंग यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी और वायबिलिटी के लिहाज से अदर देन द गो टू फॉर्मूला जिनको हम कहते हैं कि बस मोनेटाइजेशन हो जाए या हम कुछ एड्स बेच दें या हम लोकल इदारों के साथ पार्टनरशिप्स कर लें. When we talk about strategizing a business model, तो उसमें कोई experimentation नजर नहीं आती. As we can see that less than 1/5 have said that they are actually working on it or actually generating revenue from it. Or we'll take Sundus in the panel in the next session, and I'm sure she will have some interesting contribution to give when we talk about business modeling. Because business modeling, the lack of business modeling is essentially why we feel like independent media is not able to sustain itself in the long run. So, सवाल था कि आपके ख्याल में how has the following affected the financial stability of regional media in Pakistan? Switch to digital media में एक बहुत overwhelming majority ने कहा कि positive effect है. Government policies towards media में एक overwhelming majority ने कहा कि negative effect है. और ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री में देखें थोड़ा सा पोलराइजिंग रिस्पॉन्स है. कुछ लोगों को लगता है कि बिल्कुल ही इसमें कोई असर नहीं है और ज्यादातर लोगों को यही लग रहा है कि इट्स अ नेगेटिव इफेक्ट. बट वी सी दैट ऑब्वियसली वी डू हैव, आई थिंक इसमें एक वजह इसकी कि इसमें पॉजिटिव इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है. आई थिंक उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इसमें से 1/4 ऑफ आवर रिस्पोंडेंट्स वर फ्रॉम पंजाब. So this was it for the findings on regional media. The following findings are from digital media outlets. Digital media outlets, हमारे पास 150 में से 60 जो responses थे वो digital media outlets की तरफ से थे, जिसमें से more than half of these, 53.3% of these were outlets that were covering national news, while 46.7 were operating on a regional scale. This is also an interesting distinction because डिजिटल आउटलेट्स के लिए उतना आसान नहीं होता
to have correspondents or reporters, all over the country. But despite that, we see that more than half of them are doing national news in some capacity or the other. Monthly revenue for these outlets is barely self-sustaining, as we can see. 87% of digital-only outlets make less than 200,000 rupees a month, and only around 4% make more than 600,000 rupees. But despite that, when asked if there is an enabling environment for digital media to grow, we see that almost 90% believe that that is actually the case for the growth of digital media. Main source of revenue, advertisements hain. Platform monetization is not as much as we would like for it to be. Uh, Interestingly, takriban one third of uh, a source of revenue is cited as projects and grants, which shows that digital media outlets have entered the fundraising space. अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में देखें, एडवर्टीजमेंट्स वही सोर्सेज जो साइटेड हैं एज मेन सोर्सेज, उन्हीं इदारों ने अगर डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की भी है टुवर्ड्स अदर सोर्सेज, देर स्टिल रिवॉल्विंग अराउंड द सेम. मतलब अगर किसी की मेन सोर्स प्रोजेक्ट या ग्रांट थी तो उसकी अदर सोर्स एडवर्टीजमेंट बन गई, या अगर किसी की मेन सोर्स एडवर्टीजमेंट थी तो वो उसकी अदर सोर्स प्लेटफॉर्म मोनेटाइजेशन बन गई. बट सिर्फ एक रिस्पॉन्स हमें मिला है, प्रोफाइल स्टोरीज, विच आई एम नॉट श्योर, आई मीन इंडिविजुअली तो आई कांट से कि ये किसका रिस्पॉन्स होगा. But now a profile story is, I would call it, a diversified means of revenue generation, and only one person has given a completely out of the box source of revenue generation. Despite that, digital media mein takriban 80% of our respondents believe that the country's digital environment is having a positive impact on the growth of digital media. Challenges for digital and regional media outlets. इसके बाद हम आएंगे towards individual media. कुछ जो talking points हमें मिले, एक तो ये कि पाकिस्तानी journalists are consistently targeted with abuse, harassment and coordinated campaigns on social media to malign and discredit their profession during the years 2020 to 2021. So this is a direct quote that we've taken from our survey. Quality of followers, interestingly, audiences की capacity to retain certain news content, audiences की capacity to be able to stay engaged in the kind of content streams that are being put out is thought to be a major challenge. Misinformation and fake news are affecting digital platforms as people now consider them a non-reliable source of news, and self-censorship is obviously cited as one of the biggest challenges. We also have understanding of channel dynamics, content freshness, professional design consistency, and a future-proofed strategy. So, organization point of view, say these are the same challenges that we talk about when we talk about media development. तो मोटे-मोटे यही वो challenges हैं जिनकी हम भी बात करते हैं, and it figures that digital media outlets have some know-how of what the challenges are. But when we talk about countering those challenges, yeah, strategies to avert those challenges and move towards alternate generation of revenue, wahan pe we see them struggling. The last section of the survey is individual-led outlets. Interestingly, now आप देखें, individual led outlets में तकरीबन आधे लोगों का जो primary source of income है वो YouTube है. And this was what I was talking about. This is what I was saying, that for independent journalists and for independent media practitioners, YouTube monetization का मतलब है sustainability. YouTube monetization का मतलब है कि now we're making money. Our channel is it's gonna churn the existing content on its own, and based on what makes us more money, we're just gonna focus on that kind of content and try to make it more. So, and also what I was in response to my question to Tahir Saab a few minutes ago, unlike digital outlets and regional outlets who divert their audiences to their own websites, individual-led outlets primarily focus on social media pages, television, YouTube, or their own websites. How would you rate the following government policies with regards to digital media?
इसमें रजिस्ट्रेशन या ऑब्टेनिंग अ लीगल स्टेटस में देखें, या तो लोगों को पता नहीं है, लेकिन इसमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी कहती है कि या तो वो अच्छे हैं या वो एवरेज हैं, सो दे मोस्टली ओके विद दैट. They're also, they seem to mostly be okay with advertisement policies on digital media. But interestingly, and it figures that they're not very satisfied with digital payments and banking solutions, and this is something that we face a lot. अभी तक आप अंदाजा लगाएं पाकिस्तान में पेपैल नहीं है, and I honestly personally find a lot of freelancers and independent journalists talking about the fact that just because PayPal Pakistan में exist नहीं करता, they actually have to give up on projects, or they actually have to find people in between, maybe in Dubai or somewhere in the UAE. They have to find buffer accounts to send payments to, and then it takes a hit on their income as well. From which of the following sources are you currently generating revenue from? I think we've already covered this, but इसमें content monetization भी है, इसमें sponsorship campaigns भी हैं, और इसमें कुछ responses, तकरीबन 15% responses are also saying that they haven't started generating revenue yet. When asked if digital platforms advertisement policy impacted the revenue generation, 52% said it had no impact, but 31.6% have said that it had a positive effect, while 15.8% said it has a negative effect. About the flow of advertisement revenue to global platforms like Facebook and Google affecting the digital media industry in Pakistan. So इस पे actually मेरी असद से काफ़ी गाली एक interesting discussion हो रही थी, and he said he wanted to talk about this in more detail. So at the end of the session, I think I'll ask Asad to come back to this, and I would like to stop here after the challenges. इसमें देखें, individual led outlets का सबसे बड़ा challenge है content production, because obviously unlike, and this is not a challenge that we saw for digital and regional media outlets. Digital और regional का challenge था content freshness, probably because उनके पास content production teams होंगी, उनके पास equipment gear studios होंगे, but maybe what they would be lacking on is new ideas for content, yeah, good enough ideas for revenue generation. But for the individual, you see that production of the content itself happens to be one of the biggest challenges, and essentially editorial oversight is directly tied to content production. Lack of funds and trainings, obviously, that's one of the biggest challenges. And GB से हमें एक interesting insight मिली कि private sector नहीं है GB में for the individual, and we'll talk about this in more detail in the panel discussion. And we asked people, obviously, for the design of our courses and trainings, we asked if your team has been professionally trained, and we see that most of them have been trained in digital news production, writing for the web, recognizing, countering misinformation, and using social media. But despite that, sorry, the graph seems to be a little cropped out. लेकिन इसमें तकरीबन वही कैटेगरीज थी. इसमें इसके अलावा कंटेंट प्रोडक्शन की कैटेगरी है, इसमें एडिटोरियल ओवरसाइट की कैटेगरी है, इसमें मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन के टूल्स की कैटेगरी है एडिशनल, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव सेड yes to needing any kind of training. We're expecting to release the full report next month, जिसमें हमारी जो qualitative analysis है, interview analysis वगैरह वो भी होगा, और जब वो report publish होगी तो we'll share it with you guys, and hopefully, if possible, we would like to have a follow-up session for this also. That's it for the first session for the report findings. So the next session, the next 30 minutes are dedicated towards taking questions and feedback from the report. Arslan Saab, has Asad joined us? नहीं, मुआज मुझे लग रहा है कि वो नहीं आए, क्योंकि उनकी यूनेस्को में एक मीटिंग थी, तो शायद वो भी वहां से फ्री नहीं हुए. Okay. कहा तो यही था कि वो पहुंच जाएंगे, लेकिन ठीक है. So Arslan Saab, I would like to hand over to you this discussion on the findings, if you would like to initiate, if you have any ओके, feedback. थैंक यू वेरी मच. मैं शुरू कर लेता हूँ इसको, क्योंकि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. ख़ास तौर पे एक जो मैंने चीज़ नोट की है कि लोग जो है अभी तक सिर्फ यूट्यूब मोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको ही
सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ रहे हैं जो सहाफ़ी लोग हैं, और दूसरा ये कि अभी तक जो बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं वो एज सच जो जर्नलिस्ट हैं उनको सोचने में कामयाब नहीं हो सके। तला मैं आपसे शुरू कर लेता हूँ, क्योंकि आप एक माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप चला रहे हैं अपना, जिसपे बहुत क्वालिटी कंटेंट आप प्रोड्यूस करते हैं, और होपफुली आप सस्टेनेबिलिटी और वायबिलिटी की तरफ भी चले गए हैं अब तो माशाल्लाह। कितना ज़रूरी है इस वक्त सहाफ़ियों के लिए ये समझना कि सिर्फ जितने भी मीडिया के कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए ये समझना कि सिर्फ यूट्यूब मोनेटाइजेशन और फेसबुक मोनेटाइजेशन ही उनको सस्टेनेबल नहीं बना सकती? Thank you so much. I think मुझे तो थोड़ा सा मेरा mindset, I think, I mean, obviously like over the last few years काफी ज़्यादा change हुआ है, especially in the journalism industry. मैंने खुद like journalism पढ़ा, फिर मैंने documentary पढ़ी, तो ज़ाहिर है I see myself more as a journalist and then an entrepreneur या business वाली side के ऊपर. I think a lot of times what I feel like कि जो हम लोग के journalist community है या जो भी बंदा media के अंदर कुछ भी करना चाहता है, they only think everything around the content. और जैसे आपने कहा इन द सेकंड इज द ओनली द यूट्यूब मोनेटाइजेशन, जैसे मौसी पहले बता रहा था लाइक 99 सीरीज आती हैं, तो जर्नलिस्ट की लिटरली यही आती हैं कि जी हमारा पेज जो है वो मोनेटाइज होगा, हमारे मिनट्स कब पूरे होंगे। बट ज़ाहिर है वो एज एन इंडिविजुअल मे बी आप उस पूरी चीज़ को सस्टेन कुछ ना कुछ कर पाएँ, बट अगेन अब अगर आपने एक बिजनेस बनाना है आउट ऑफ the whole media, that's a different thing rather than just making like $100, $500. बेशक आप literally 5,000 भी बना लें, but like running a company एक structure wise is very different. So I think how I think is I think a lot of times what people don't think it in a sense के like we need to think as an entrepreneur not as a journalist. So वो जो काम है आपका वो ज़ाहिर है it's a process, you know. So उस पूरी चीज़ को I think shift करना is very important. अभी recently हम लोग खुद कुछ ट्रेनिंग जर्नलिस्ट की करवा रहे थे और वो ये डिजिटल मीडिया के हवाले से, और उसमें वही था कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपने फिर डिफरेंट हैट्स पहनने हैं। अभी तो ठीक है आपके पास टीम नहीं है, अभी आपको अकाउंट्स नहीं आता, अभी आपको मे बी ब्रांडिंग या मार्केटिंग का बिल्कुल नहीं पता, अभी आपको बहुत से छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें कोलैबोरेशन का नहीं पता, आपको लाइक यू नो फाइंडिंग द राइट पार्टनर्स, छोटी छोटी इतनी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं कि जो पीपल डोंट फोकस अ लॉट। तो मेरे ख्याल से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपना वो जो जर्नलिज्म वाला हैट है उसको ऑब्वियसली आप रखें अपने कंटेंट के अंदर, but start thinking as a business, you know, rather than just कि यार मैंने बस कंटेंट बनाना है और वो मेरे मिनट्स बस पूरे हो जाएं और मेरी यूट्यूब मोनेटाइजेशन शुरू हो जाए। सही है ताज साहब, मैं इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ बात को। अब तलहा ने कहा कि आपको बहुत सारे हैट्स पहनने होते हैं। अगर आप एक कंपनी एक बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, लोग सुजात बहुत अच्छा जर्नलिस्टिक कंटेंट प्रोड्यूस करता है, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं आपकी सारी खबरें देख रहा होता हूँ, आप नीचे वाले जो छोटे छोटे शहरों हैं वहां से बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि कंटेंट डाइवर्सिफिकेशन जो है वो कितनी हेल्पफुल साबित होती है सस्टेनेबिलिटी के लिए? आप मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के साथ जुड़ते हैं, वो आपकी एक परमानेंट ऑडियंस बनती है, वो परमानेंट ऑडियंस जब आपके ट्रैफिक में कन्वर्ट होती है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो बिजनेस मॉडल है उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही होती है। तो कंटेंट डाइवर्सिफिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस मॉडल को सक्सेसफुल बनाने के लिए? जी अरसलान, थैंक यू। मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा बहस नहीं है कि अगर आपको एक वाइडर ऑडियंस को अपना परमानेंट व्यूअर या पार्टिसिपेंट बनाना है तो आपको कंटेंट में डाइवर्सिफिकेशन तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको चाहिए ही। लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो, या इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि जो आप अपनी नीश डिफाइन करना जो है ना, वो भी सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को प्लेस कहाँ करते हैं, आपकी नीश क्या है, आप स्पेशलाइज कैसे करते हैं। मतलब वही आपकी फिर आगे ब्रांडिंग में भी वही आपको हेल्प करता है, बल्कि ब्रांड आपका डेवलप ही उसी पे होगा। अगर तो आपने सिर्फ जो कुछ मीडिया में ओवरऑल हो रहा है उसी को रिगर्गिटेट करना है तो, और उसी को ही सिर्फ आपने चर्न आउट करना है या डिफरेंट तरीकों से करना है, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपको कोई ऑडियंस
क्रिएट करना और सस्टेन करना। तो मेरे ख्याल है कि सारे स्टार्टअप्स को इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी नीश क्या है। आपकी जैसे रिसर्च में नज़र आया, कुछ लोगों ने अपनी रीजनल जो है उसको नीश बना लिया है और बहुत अच्छा बना लिया है। कुछ ने अपनी जो है वो वर्नैकुलर लैंग्वेज को बना लिया है। बहुत छोटे-छोटे से स्टार्टअप्स हैं, लेकिन ये कि वो अपने एरियाज़ में, अपनी फील्ड्स में ऐसा-ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद मेन स्ट्रीम या कोई और हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि जब डिजिटल के अलावा भी कोई डिजिटल फैसिलिटीज़ के अलावा भी कोई उसको कर सकता है। मैंने एक सब्सक्राइब किया हुआ है ब्रावी टीवी, तो वो ब्रावी लैंग्वेज जो है वो उसका तो बेशुमार लोगों को पाकिस्तान में पता भी नहीं कि वो भी कोई एक लैंग्वेज है। बलूचिस्तान के भी बिल्कुल इंटीरियर में बहुत थोड़े से लोग हैं जो बोलते हैं। लेकिन वो ब्रावी टीवी के जो मुजाहिद हैं, वो मोटरसाइकिल पे फिर रहे होते हैं इधर-उधर, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज में और अपने एरिया और अपने कल्चर के हवाले से काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट देते हैं। तो मेरे ख्याल है नीश डिफाइन करना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी आप ऑडियंस को भी क्रिएट कर सकते हैं, अपना ब्रांड भी तभी आप आइडेंटिटी डेवलप कर सकते हैं, जो कि ज़ाहिर है कि किसी भी बिज़नेस मॉडल के लिए बड़ा जिसकी प्रीमियम इम्पोर्टेंस है। सही है भाई साहब। सुंदर, आपने अभी एक मुआज मेरे से जिक्र करा था, आपको माशाल्लाह एक ग्रांट मिली है अभी आपका अपना स्टार्टअप के लिए। आपने ऐसा क्या सोचा, आप अपने जो हमारे देखने वाले हैं या जो जो भी इससे मुस्तफीद होना चाहें, कि आपने ऐसा क्या सोचा कि आप वो ग्रांट हासिल करने में कामयाब हो सकी, और आपने सिर्फ ये नहीं सोचा कि मुझे भी एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए और उसके जरिए बस उसको मोनेटाइज करवा के फिर वहां से पैसे कमाने की कोशिश करनी चाहिए? Thank you for having me on. But ये grant मिलने से पहले it was quite a few failures that we went through, and I think Arsalan, you were witness to that. ठीक है, so you know, as journalists, as people who've been in the 9 to 5 in media, we sit on ideas for too long. But I think अब वो time आ गया कि we need to move on from it and start sort of investing in our own channels. मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे grant मिली और the financial push that I got, so to speak. I think we also need to show to investors that we are invested in it, right? So say the hackathon that I attended, usse mujhe at least material mil gaya. I got the expert insight into what I should be doing, and after that, I'll be dead honest with you, I did put my own money into it because I was convinced of it कि अब ये करना है, right? And I understand that that's not a luxury that many of us may have or would be even be willing to make that choice given the economy that we're living in. But that said, even with the grant and everything else, it's not easy. Whether we talk about whether it's building our niche, whether it's the technical side of thing, at the end of the day, like you said, it does boil down to the fact that our business models are not solid, right? We haven't even started a YouTube channel yet. For now, our focus is actually Instagram, right? क्योंकि हम lifestyle entertainment उसकी बात कर रहे हैं. And with that niche, it's very, very easy to to sort of slip into very terrible content, to be honest. Like I think kal tha, there was news that came from Instagram that a particular actress had died. It was posted on her own Instagram stories, right? And then everybody picked it up, right? And then Geo and ARRY were running little articles on it as well, completely not verified, right? And so this is that niche that's really easy to mess up. And hopefully what we want to do with Urban Lounge is not that, for people to see entertainment, lifestyle, music, art, culture as quality content. But the problem with producing quality content without a grant always becomes that who is going to pay for it? How am I going to produce it? If I don't get the numbers, so I will not get those placements. Okay? That 5,000 rupees per Instagram post is not going to happen. And more so than the content, I feel personally for me, mera background radio se hai, which is the other end of the technology spectrum. But us intelligence को digital में लाना has been very difficult. And what happens is that, you know, I can read an article or two about what the Instagram algorithm is doing this week, but it turns out कि 2 हफ्ते बाद वो कुछ और कर रहा है, right?
and it becomes very difficult to chase those numbers. So in that regard, I think I'm going to agree with Tahir Saab, who said that it's very important to build your niche. कि ये वाली न्यूज़ आपको यहाँ से मिलेगी, वो वाली न्यूज़ वहाँ से मिलेगी, कि अगर आप अर्बन लाउंज पे आते तो you will get entertainment news that is not sensationalized, if that's possible, or at least not embellished as much as it is. But so I feel like we're in a space, even with the little bit of money that we have, that we are still struggling with understanding the numbers side of it. The numbers are important. It's what I will eventually use to talk to the advertiser. It's what will eventually, determine my placements. But जो सबसे बड़ी opportunity है digital की, वही सबसे बड़ी threat भी बन जाती है, because we don't know how far this algorithm will take me, and when it changes, what will happen to my so-called sustainability. So that's where we are, I think. ताहिर साहब, आपके साथ दोबारा मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की क्वालिटी की संतोष ने अभी ना, कि मैं ये देखता हूँ कि जो नंबर गेम के चक्कर में जो जर्नलिस्टिक कंटेंट है उसकी क्वालिटी बहुत पुअर हो रही है। मैं बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स देखता हूँ जो कि मेन स्ट्रीम जो मीडिया हाउसेज उनकी वेबसाइट्स हैं, उनकी हेडलाइंस कुछ इस तरह की होती हैं कि जो ट्रिक करती हैं लोगों को। आप अंदर खबर पढ़ें कुछ और होगी, जैसे क्लिक बेट कहते थे, अब वो क्लिक बेट से कुछ बहुत आगे चला गया काम, के वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है छोटी छोटी चीजें निकाल के डाल रहे हैं, लोग क्लिक कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में, अगर मैं बिजनेस की बात करूं, क्योंकि बिजनेस में जाहिर सी बात है सस्टेनेबिलिटी के लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए आई बॉल्स चाहिए, जिस तरह टीवी ने जो कुछ किया सेंसेशनलिज्म के लिए, रेटिंग्स के लिए जो कुछ करता रहा टीवी, आने वाले दिनों में ये बिजनेस की सर्वाइवल के लिए कितना बड़ा थ्रेट होगा जर्नलिज्म की क्वालिटी के ऊपर। और एक जर्नलिस्ट जो है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करना चाह रहा है, उसको इस चीज को बैलेंस कैसे करना है? ये बहुत ट्रिकी सा काम नहीं हो जाएगा आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, ये बहुत ट्रिकी सा काम है, और मतलब जिस तरह आप की बात में जो है वो ऑलमोस्ट जवाब भी मौजूद है, कि जिस तरह जो टीआरपीज ने जो टीवी कंटेंट के साथ जो कुछ किया है, ठीक है, वो मेरे ख्याल है कि ज़्यादा लीथल और ज़्यादा एक्सट्रीम तरीके से वे में होता है सोशल मीडिया पे, क्योंकि टीवी में तो फिर भी थोड़ा सा पर्दा होता है, आप घुमा फिरा लेते हैं, एडवर्टाइजर है बीच में, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, आप कह लेते हैं कि नहीं जी नहीं, हमारा तो इतना है, इतने व्यूअर्स हैं और इतना सब कुछ है। अरोरा की जो एडवर्टीजमेंट की एनालिसिस है वो साल बाद आती है, तो वो अगर आपको बिल्कुल कोई ऑब्जेक्टिव चीज भी चाहिए हो, लेकिन यहाँ पे तो लाइव आ रहा है ना आपके पास, हर कंटेंट पे आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या एंगेजमेंट है आपकी, आपके कंटेंट की जो है वो व्यूअर ने क्या वैल्यू की है। तो मतलब आप अपने आप को ही जो है वो हर वक्त, आप बाकी जो compete कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन आप हर वक्त अपने पिछले कंटेंट से भी compete कर रहे हैं, कि आप उसको भी आपने एक्सेल करना है, या और आपने जाना है, उससे भी आगे जाना है, तब आप उसमें जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। मेरे ख्याल है ये टीआरपी से ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन है, और ये इसको शेप करता है एडिटोरियल जो इसकी डायरेक्शन है, जो कंटेंट यहाँ पर सोशल मीडिया पे पॉपुलेट होता है उसकी, ये उसको डिक्टेट कराता है कि अगर आप वो नहीं करेंगे। इसीलिए आप देखें कि बहुत सारे जो वायरलिटी जो है, जो नया कंसेप्ट है बिल्कुल, मतलब वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है। एक लड़की जो है वो हमारी पार्टी हो रही है पे मिलियंस के व्यूज ले लेती है, लेकिन उसके बाद वो 2-4 महीने बाद कुछ और आ जाता है, फिर कुछ और आ जाता है। तो ये जो फ्लक्स है, ये जो इतना ज्यादा फिकल जो है इसकी नेचर जो है सोशल मीडिया की रेवेन्यूज की और जो व्यूअरशिप की, वो मेरे ख्याल है बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें अगर आप आई बॉल्स पे ही रहते हैं तो आप इसमें कोई एडिटोरियल सैनिटी जो है वो कायम रख सकते हैं, नहीं रख सकते आप। तो जैसे आप खुद भी बता रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी गेट बाउंकर्स के, वो बिल्कुल कुछ का कुछ कर रहे होते हैं, क्लिक बेट कर रहे होते हैं, सब कुछ। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप आई बॉल्स पे और एड रेवेन्यू पे डिपेंडेंट रहते हैं तो सॉरी, तो आप इस चीज से बच सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल है बहुत बड़ा एक रोल जो है वो प्लेटफॉर्म्स का भी है, कि जो प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनका जो एल्गोरिदम्स हैं वो एंगेजमेंट को इंसेंटिवाइज करते हैं, जो एंगेजमेंट बेस्ड हैं वो सारे, वो एंगेजमेंट चाहते हैं। तो एंगेजमेंट आती है आपको हेट स्पीच पे, मिसोजिनी पे,
पॉलिटिकली डिवाइसिव डिबेट्स पे, एक दूसरे की माँ बहन करने पे एंगेजमेंट इस चीज़ पे आती है। तो इसके अलावा जो है वो आपको, अगर आप कोई बहुत अच्छा सोबर कंटेंट क्रिएट करें, मतलब बात ठीक है, आपके नंबर भी फिर उसी हिसाब से सोबर रहेंगे, और आप उसको, जो वो आपको प्लेटफॉर्म जो उसके रिटर्न में जो रेवेन्यू देता है, उस पे तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं चल सकता। तो हमने तो एज अ पॉलिसी अरसलान डिसाइड किया हुआ है कि वी डोंट गो फॉर मोनेटाइजेशन। हम नहीं करेंगे, और ना ही हम एडवर्टाइजमेंट पे जाना चाहते हैं। ठीक है, अगर एडवर्टाइजमेंट पे ही जाना है तो फिर हम बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया मॉडल को कम्पीट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम तो उसके कोई अल्टरनेट डेवलप करने की जद्दोजहद में हैं। हमें नहीं पता कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये हमें पता है कि अगर हम एड रेवेन्यू के पीछे जाते हैं तो फिर हम अपनी जो एडिटोरियली जो हमने अपनी नीश बनाई हुई है, वो हम नहीं सस्टेन कर सकेंगे, उस पे हम नहीं कायम रह सकते। सही ताहिर साहब, बहुत ही जैसे कि ट्रिकी सी सिचुएशन है मेरे लिए बतौर सहाफ़ी, आपके लिए बतौर सहाफ़ी, के आप एक एक सहाफ़ी के तौर पे सोचते हैं कि आप सोसाइटी की तरफ क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सस्टेनेबिलिटी के लिए बिज़नेस भी चाहिए, पैसे भी है। तला, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि थोड़ी देर पहले ऑडियंस की जो है आप बात कर रहे थे, सुंदस कह रही थी कि आपको जानना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या देखती है, क्या सुनना चाहती है, ऑडियंस एंगेजमेंट कैसे होती है। आप लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। कौन सी ऐसे आपके टेक अवेज हैं उन एक्सपेरिमेंट से कि आजकल ऑडियंस जो है वो किस तरह का कंटेंट पसंद करती है, और उस कंटेंट को आप जर्नलिस्टिक वैल्यूज के साथ कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जहां पे जो ताहिर साहब ने बातें की हैं वो सारी चीजें हम माइनस कर दें उसमें से, कि उसकी क्वालिटी भी कंप्रोमाइज ना हो, आपका जो एक बतौर सहाफ़ी कंटेंट प्रोड्यूसर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पूरी हो जाए, और आप कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी बढ़ते जा रहे हो। मैं आपकी देख रहा था पिछले दिनों में एक सीरीज आप लोगों ने जीपी के एनवायरनमेंट के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर प्रोड्यूस किया है, उसके ऊपर बहुत बहुत ज्यादा मैसेज जो है वो ऑडियंस आ रही है, उसके नंबर्स बहुत अच्छे मैंने देखे। आपको क्या लगता है कि हमारी ऑडियंस जो है इस तरह के सीरियस कंटेंट की तरफ अब जा रही है? I think this is right. Something it's quite tricky to be honest. मतलब हर 5-6 महीने बाद वी फील लाइक के लैंडस्केप है वो चेंज हो रहा है बहुत मैसिवली। अब जैसे क्लाइमेट चेंज की अगर हम लोग बात करें, तो जब हम लोग स्टोरीज प्रोड्यूस कर रहे थे बिफोर द फ्लड, तो बहुत ज़्यादा अगर कोई इतना ज़्यादा नहीं उसको देख रहा था, बट वी फील लाइक इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और उसको हम किस तरीके के साथ ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। अब अगेन उसमें हमने स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज इस तरह की थी कि यार, सो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग डिजिटल। आई फील लाइक वन इज जो हम लोग अभी सारे डिस्कस करें कि आप बस क्लिक बेट यार ये चीज़ चल रही है, दिस इज व्हाट आई विल डू, आई विल मेक मनी। एंड द सेकंड इज कि नहीं यार, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, बट उसको अब आपने किस तरह वायरल कर लें या लोगों तक सही तरीके के साथ पहुंचाना है, एंड टू डू द बिजनेस एज वेल। So that's the route I think जो हम लोगों ने probably लिया, और ताहिर साहब ने और सारे ज़्यादातर जो अगर ज़रा सीरियस जर्नलिस्ट हैं जो कुछ करना चाह रहे हैं। अब उसके अंदर आई थिंक जो थोड़ी सी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज का मैं आपको बताऊँ, हमने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी एक की कि रादर दैन ब्रिंगिंग द ओल्ड स्कूल एक्सपर्ट्स, हम लोग जो यंग एक्सपर्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उनको हमने लाना शुरू किया। अब उसमें ये था कि सर एक अगर बंदा या बंदी जो पीएचडी कर रही है, वो जब बात कर रही है उन टॉपिक्स के ऊपर अपने जैसे लोगों, अपनी जैसी ऑडियंस के लिए, तो लोग थोड़ा सा उसको ज़्यादा सुन रहे थे बनिस्बत के बहुत ही ओल्ड स्कूल पुराने अगर कोई अंकल आके बैठ के बात कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि वो चीज़ हमने उस टाइम तो प्रोड्यूस कर ली, लेकिन उसके बाद जब फ्लड्स आए हैं तो वो अचानक वो चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल उस टाइम होना शुरू हुई है। फिर अगेन एक और मैं छोटी सी एग्जांपल दूँ, हम लोगों ने जर्नलिस्ट डायरी की, हमने जजेस के साथ एक एक एक्सक्लूसिव मेमोआर सीरीज किया, फिर ब्यूरोक्रेट्स के साथ, फिर ग्वांटानामो बे के डिटेनीज, फिर ड्रोन सर्वाइवर्स। अब अगेन आई थिंक थोड़ा सा ये था कि जब हम लोग ये अपनी स्ट्रैटेजी शुरू में भी और अभी भी सर है ऑन बेसिस लाइक हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, तो हमें भी थोड़ा सा ये है कि अच्छा यार, लाइक वी नो कॉन्शियसली कि लोग सीरियस कंटेंट नहीं देखना चाहते। अगर आप बैठ के एनालिसिस शुरू कर दें या आप बहुत ज़्यादा वो करें, बट ज़ाहिर है हम लोग करना भी वही चाहते हैं, वरना हम लोग बस फीड या इस तरह के बहुत से नए अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए हैं जो क्लिकबेट अब
वो जर्नलिस्ट उसको चला रहे हैं, वो एक्सट्रीम क्लिकबेट वाली साइड पे हैं। बट हम लोगों का थोड़ा सा उसमें डिसीजन ये था कि हम लोग किस तरीके के साथ काम वही करें बट ज़रा अच्छा कर सकें। बस एक एग्जांपल मैं आपको दूँ, हमने ब्यूरोक्रेट के साथ जब किया तो टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लग रहा था कि वो चीज़ चलेगी बहुत ज़्यादा। आई वाज लाइक यार ब्यूरोक्रेट को कौन सुनना चाहता है, मतलब और जो बिल्कुल केसेस भी कोई बहुत ज़्यादा वेल नोन नहीं है। बट अगेन आई थिंक उसमें हम लोगों ने जो थोड़ा सा डिजिटल मीडिया की हमारी एक्सपर्टीज है, जो स्टोरी टेलिंग की एक्सपर्टीज थी, वो जब हमने उसमें ऐड की, थोड़ा सा उसका प्रोडक्शन स्टाइल विजुअली थोड़ा बेहतर किया, थोड़ा सा उसकी स्टोरी टेलिंग बेहतर की, थोड़ा सा उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमने बेहतर की, थोड़ा सा उसको हमने कुछ अच्छे तरीके के साथ किया, तो वो लाइक बहुत अच्छे उसके रिस्पॉन्सेज आए। सेम विद द जजेस, मतलब आप किसी जज को बुला के तो बात करें तो आई मीन नो वन इज इंटरेस्टेड, बट अगेन वो सीरीज वेंट लाइक रियली वायरल। अभी हमने ड्रोन सर्वाइवर्स के साथ की, गुआंटानामो बे का मैं आपको बता रहा था, वी गॉट एक्सक्लूसिव एक्सेस। बट अगेन ये फिर बड़े वो सेंसिटिव टॉपिक्स हो जाते हैं कि जिस पर फिर आप 10 दफ़ा सोचते हैं कि यार आप करें या ना करें। So I think मेरे ख्याल से like what we try normally to do is, एक तो I think analytics हम बहुत closely follow कर रहे होते हैं कि यार अच्छा ठीक है, अगर ये वाली स्टोरीज कुछ थोड़ी सी परफॉर्म हो रही हैं तो इनमें कितनी जान है कि हम इनको और बेहतर कर सकते हैं थ्रू द स्टोरी टेलिंग, थ्रू द मार्केटिंग, थ्रू डिफरेंट तरीकों के साथ। और बाकी तो यही है कि आई थिंक एवरी फ्यू मंथ्स वी आर आल्सो इवॉल्विंग। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, व्हेन वी स्टार्टेड तो पर्सनली मुझे जियो पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा शौक था, अभी भी है। तो वो हम लोगों ने इंटरनेशनल जो बड़ी स्टोरीज है, नॉट ऑब्वियसली कि अमेरिका के अंदर या यूएस में, यूरोप में, छोटे इशूज हैं, जो बड़े ग्लोबल इशूज है, माइग्रेशन चल रहा था, अरब अपराइजिंग के ऊपर, बट पाकिस्तान में लाइक नो वन इज इंटरेस्टेड एट ऑल। नॉट कि हम वो पूरा वो कर रहे थे, वी वर ओनली डूइंग लाइक 10% ऑफ द कंटेंट, बट वो फिर हमने देखा कि नहीं यार, लाइक पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। बट अगेन समटाइम्स नाउ स्टिल वी डू इट, हमारा पूरा एक फॉर्मेट है इंटरनेशनल स्टोरीज का, उसमें हम लोग फिर पाकिस्तान के साथ उसका क्या कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं फिर हम लोग जोड़ते हैं। तो वो इट्स लाइक टेस्ट एंड ट्रायल, to learn, to see what's working, what's not working, and adapting like every day. मैं इसमें असलान में इसमें जी जी, श्योर। एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ऑडियंसेस जो हैं वो डेफिनेटली मौजूद हैं, ठीक है, और हर तरह के क्वालिटी अच्छे कंटेंट की ऑडियंस मौजूद है, ठीक है। मसला सिर्फ ये हो गया है कि डिजिटल स्पेस में अब मिलियन से कम जो है कुछ भी जो है वो इज कंसीडर्ड फ्राइवलस, या मतलब वो तो हमारा तो हमने तो ये हमारी ये तय किया हुआ है कि मतलब वी आर नॉट गोइंग आफ्टर मिलियंस। हमें पता है कि जो ऑडियंसेस हैं वो एंटरटेनमेंट टाइप जो कंटेंट है उसकी कुछ और है ऑडियंस है, उनका नंबर कुछ और हो सकता है, उनकी ऑडियंस हम भी हो सकते हैं। मैंने भी वो हमारी पार्टी हो रही है वाली वीडियो जरूर देखी है, ठीक है, तो उनकी ऑडियंस तो मैं भी हूँ। मतलब अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ प्रॉब्लम एक, या प्रॉब्लम कह लें, या एक उसकी जो खास बात है वो ये है कि इसमें आप जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप ये सिर्फ नहीं है कि आपके पास सिर्फ कोई न्यूज कंटेंट आ रहा है, ठीक है, फिर कोई एंटरटेनमेंट, जो पहले डिस्टिंक्शन मौजूद थी ना कि ये न्यूज चैनल है, ये एंटरटेनमेंट चैनल है, ये स्पोर्ट्स चैनल है, अब वो सारा कुछ इकट्ठा आ रहा है। तो बेसिकली आपको अटेंशन के लिए आपको अपने जो कंपैरेटिव जो आपकी जो फील्ड के जो और प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ आपका कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन हर एक के साथ ही है, ठीक है। अगर आपको ऑडियंस लेनी है तो उस टाइम तो उनके पास वही है जो जिसमें वो देख रहे हैं, उसी में वो एंटरटेनमेंट भी देख लेंगे, स्पोर्ट्स भी देख लेंगे, कोई रिलीजियस कंटेंट भी देख लेंगे, उसी में अगर कोई न्यूज कंटेंट, कोई टीसीएम की वीडियो, कोई सुजात का कोई आर्टिकल, वो भी उसी में। कंपटीशन की नेचर बहुत फर्क है, ठीक है, लेकिन ऑडियंस हर एक की मौजूद है। सिर्फ मेरे ख्याल है स्टार्टअप्स को ये भी रियलाइज करने की जरूरत है कि आप क्योंकि अगर आप मोनेटाइज करके और उस पे जाते हैं फिर तो मिलियन पे जाना मतलब आप डू एंड डाई है ना, फिर तो कि अगर आप मिलियंस में नहीं जाते तो फिर तो आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां से, ठीक है। तो अगर आप कोई और रेवेन्यू की अपनी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी की कोई और तरीका बनाते हैं तो फिर प्रोबेबली आप ज्यादा आराम से जो आपकी ऑडियंस बनती है उसको अटेंड कर सकते हैं। आप फिर इस कंफ्यूजन में नहीं रहते कि बस मुझे हर वक्त जो है हर बंदा चाहिए जो यही देख रहा हो। हर बंदा टीसीएम की वीडियो नहीं देखेगा, हर बंदा सुजाग का फीचर नहीं पढ़ेगा। एक मेरा सवाल, जी जी, श्योर।
This is a really good point. तो आपने पहले हम लोग अपना भी इवैल्यूएट कर रहे थे, पूरा यूट्यूब को हमने एनालिसिस किया पिछले 2 साल की वीडियोस का, और एक बाहर के कंसल्टेंट थे, उनके साथ बैठ के हम लोग एनालिटिक्स को जो स्टडी कर रहे थे, और फिर मैं मार्केट को देखा कि यार मार्केट में कितने यूजर्स हैं, इस तरह का कंटेंट कितने लोग देते हैं। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि नंबर्स को देख देख के वो कोई भी बंदा कोई भी चीज़ करता है ना, तो उसको होता है कि यार बस मैं वायरल हो जाऊँ। बट अगेन लाइक टू लुक बैक इनटू कि यार अच्छा जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ उसका जो ऑडियंस साइज है वो है ही नहीं है 20 करोड़ वाला, मतलब उसका ऑडियंस साइज ही में भी बेशक 1 मिलियन ऑडियंस का है। तो आपका फिर टारगेट जो है आपने उसके साथ फिर कम्पीट करना है, एंड दिस इज व्हाट वी टू बी ऑनेस्ट नाउ स्टार्टेड डूइंग कि यार अच्छा क्लाइमेट चेंज सीरियस, हम तो मसाला नहीं बेच रहे हैं, हम तो प्रोमिनेंट फेसेस को हम अवॉइड करते हैं लाने के लिए, हम लोग चाहते हैं कि यार जो एग्जैक्टली एक्चुअल एक्सपर्ट है इशू का उस पर लाएं, तो वो तो प्रॉब्लली 50 लाख, 1 लाख, 2 लाख, मे बी 2 करोड़ लोग होंगे। बट अगेन ठीक है, बीच में वायरल कंटेंट हमने नेकेड ट्रुथ जैसे ट्रांसजेंडर के साथ सीरीज की, वो वेंट क्रेजी वायरल, मतलब वो एक मैसेज वाला कंटेंट था। तो वो चीज़ आई थिंक सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए, मेरे लिए ज़ाती अपने लिए, कि टू लुक बैक एंड सी कि शायद मेरी ऑडियंस साइज सिर्फ इतना है, मैंने उसके साथ कम्पीट करना है। उसमें अगर मैं 20% पे हूँ तो ठीक है, मैंने 100 पे जाना है, और उसके अंदर मैं क्या मोनेटाइजेशन मॉडल जो है वो ला सकता हूँ, रादर देन कि मैं इमरान रियाज मैंने बनना है, या मैंने साबिर शाकिर बनना है, या मैंने जियो बनना है, या मैंने आर वाई बनना है। So that's I एग्जैक्टली think it's a very difficult thing to digest as well, because there है वो नंबर देख के बंदा भी कहता है यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मतलब मैं लिटरली हाँ कल बैठा हुआ था इजाज और उमर और दोस्तों के साथ, और हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि जर्नलिज्म तो डेड हो गया पाकिस्तान में, अभी तो बस आपने वीलॉग है, अभी आप बड़े से बड़ा जर्नलिस्ट, छोटे से छोटा जर्नलिस्ट, तो एनालिसिस हो रहे हैं, जर्नलिज्म तो पाकिस्तान में मतलब उस तरह कहीं भी नहीं है। तो लाइक वेयर डू वी स्टैंड इन द नेक्स्ट sort of 5 years? और हम लोग मतलब एक वीडियो पे जितनी मेहनत करते हैं, मतलब 5-5, 6-6 लोग 2-2 मिनट के पीस के ऊपर, और फाइंडिंग द कैरेक्टर्स एंड ओनली डूइंग द वीडियो, इट्स क्वाइट चैलेंजिंग इस तरह। एक सवाल मैं ताहिर साहब से करना चाह रहा जी था जरूर। on the same front, और सुंदर से भी if you could also contribute to this, जिस तरह तलहा ने बात की बहुत ज़्यादा मार्केट रिसर्च की, involving a foreign analysis, analyst and extensive research करना डेमोग्राफिक्स पे और फॉर्मेट्स पे। तो ताहिर साहब, जिस तरह आपने कहा कि आप मोनेटाइजेशन की तरफ जाना नहीं चाहते, और आप उस पर रिलाई नहीं करना चाहते एक्चुअली, because obviously it's like you said, it's frivolous, it's and this is what the research also shows, that monetization is no guarantee for sustainability, right? And like you said that आप experimentation की तरफ जा रहे हैं, जी एंड सुंदर सिंह आपने भी अभी स्टार्टअप शुरू किया, तो जाहिर है आपको भी एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ताहिर साहब, आई वुड लाइक फर्स्ट फॉर यू टू टॉक अबाउट, क्या इस वक्त लोक सुजाग में कोई डेडिकेटेड रिसर्च हो रही है एक्सपेरिमेंटेशन पे, डाइवर्सिफिकेशन पे, और अगर हो रही है या होने या होनी है अगर, तो उसके सेंटर में क्या होगा? इज इट गोइंग टू बी द ऑडियंस, इज इट गोइंग टू बी योर प्रायोरिटी कि हमने मेन स्ट्रीम जो सोशल मीडिया पे लाइक यू सेड कि हर किस्म का कंटेंट मिल रहा है, मसाला मिल रहा है, उस तरफ नहीं जाना? इज इट गोइंग टू बी द फैक्ट दैट फॉर्मेट्स पे एक्सपेरिमेंटेशन होनी है, ब्रांड की जो आपकी आइडेंटिटी है उस पे एक्सपेरिमेंटेशन होनी है? तो ये आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि एज फार एज डाइवर्सिफिकेशन इज कंसर्न्ड, आपका what plan do you have, if any? And Sundar, if you could also talk about that after. Thank you. श्योर श्योर बिल्कुल। लेकिन उससे पहले मैं ये तला की बात में सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा कि हमने भी यही कुछ फेस किया है। हमने वायरलिटी और फ्यू मिलियन वाली कंटेंट भी देखा हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है, और जो कुछ हम अब करते हैं वो भी हम देखते हैं सारा कुछ कि उसका क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं, और उसको हम बड़ा ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं। मेरे ख्याल है कि अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना, अपनी नीश डेवलप करना, और ऑडियंस को साइज अप करना कि ये आपकी इतनी ऑडियंस है, ठीक है, और फिर उसको उसके साथ कंपैरिजन बनाना जो है। अदरवाइज तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं ना, कि मतलब आप कंटेंट बना रहे हैं और वो 20,000 से ऊपर जा ही नहीं रहा, ठीक है, तो मतलब आप या तो फिर आप गलत कर रहे हैं। तो ये हमने भी टीसीएम की तरह हमने भी लर्न किया है कि यार हमें कंपेयर किससे करना है अपने आप को, ये हमें देखना चाहिए। इसमें जो एक कंसोलेशन पॉइंट है ना तला, जो मैं अक्सर मेंशन करता हूँ कि यार ये 22-24 करोड़ लोगों का मुल्क है। यहाँ पे किताब जो है ना, वो कोई भी किताब वो 500 छपती है, और किसी पब्लिशर से आप पूछें वो 2 साल में बिकती है 500 किताब, ठीक है।
तो ये यहाँ इस ऑडियंस को और इस मुल्क में हम मतलब 500 किताब आप यूरोप में कोई भी ट्रेन रोक के कहें ना कि जो भी लोग उतर रहे हैं वो किताबें वहां पे रखते जाएं तो वो 500 से ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो मतलब ये हमारी अपनी डेवलपमेंट है, अपनी हिस्ट्री है, तो हमें जाहिर है कि कंपैरिजंस भी उसके अकॉर्डिंगली बनाना पड़ते हैं। अच्छा, ये जो आप एक्सपेरिमेंटेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, इसमें हमने तैयारी की हुई है पहले से, हमने कुछ स्टडीज की हुई हैं, कुछ थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर से भी सीखा है। एक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था, मेंबरशिप पजल प्रोजेक्ट, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया था। फिर कुछ और इस तरह की मैंने चीजें भी जगहों पे हम कोई ना कोई टीम मेंबर अटेंड करके आया है। तो जो हमारा अपना प्लान है, अभी तक तो हमारी जो रेवेन्यू है, वो मेनली ग्रांट्स पे है और उसके अलावा हम जो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी है, उसको हम मार्केट भी करते हैं, यानी इसको हम बिज़नेस कहते हैं। हमारी जो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड कंपनी है, हम उसको एज़ बिज़नेस लेते हैं। तो हमने थोड़ी-सी अपनी जो हमारे अपने एडिटोरियल कंटेंट के लिए जितनी हमें प्रोडक्शन टीम चाहिए थी, उससे हमने थोड़ी बड़ी मैनेज की हुई है और ताकि फिर हम ज़्यादातर हम सीएसओज़ के लिए ही करते हैं, मीडिया प्रोडक्ट्स डेवलप कर देते हैं, उनको सोशल मीडिया मैनेज कर दिया, कोई एडवाइज़री और कर दी, तो वो भी हमारा अच्छा वाला कंट्रीब्यूशन जो है रेवेन्यू का वो आता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इम्पोर्टेंट बात है और उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी आपकी रिसर्च में नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल है उसको हमें ज़्यादा एम्फसाइज़ करना चाहिए। वो ये है कि जो सारी दुनिया में जो चल रहा है, जो मैं बता रहा था कि जो मैंने एक्सपोज़र भी लिया है दुनिया में, बहुत सारी जगहों पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो मेंबरशिप बेस्ड है, यानी कम्युनिटी रन। लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें। वो डोनेशंस की फॉर्म में भी हो सकता है और वो लेड आउट मेंबरशिप की फॉर्म में भी हो सकता है। उसके कई पेट्रियन की तरह के कई प्लेटफ़ॉर्म भी हैं जो आपको इस तरह की सपोर्ट देते हैं। कुछ वन ऑफ आपकी स्टोरीज़ के लिए भी दे देते हैं। लेकिन कुछ आपको ज़्यादा सस्टेन्ड तरीके से एज़ अ मेंबरशिप के तौर पे भी आपको देते हैं। तो हम उस तरफ चाहते हैं और उसकी हम डेफ़िनेटली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमें कंटेंट के हवाले से हमें को बहुत ज़्यादा कुछ अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, गो कि हमें इम्प्रूवमेंट हमारे उसमें बहुत ज़्यादा चाहिए कि जो हमारा एडिटोरियल कंटेंट है वो टेक्स्ट फ़ोकस्ड बहुत रहा है। तो जिस तरह मैंने बताया कि अब ये भी रियलाइज़ेशन अब पूरे टीम में सिंक कर गई है कि जी टेक्स्ट की जो ऑडियंस है, वो काफ़ी लिमिटेड है और उस ऑडियंस पे बेस करके मतलब हमारी मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है, अगर कुछ जो बहुत अच्छी भी स्टोरी जाती है, तो वो और आप हम तो क्योंकि गूगल से ना सिर्फ़ देखते हैं कि कितने उस पेज के कितने विजिटर हैं, बल्कि उनका टाइम भी नोट करते हैं। तो अगर हम ये कह सकें ना कि जो हमारी बेस्ट स्टोरी भी 1 साल में थी, वो कितने लोगों ने पढ़ी, तो वो 15 टू 20,000 लोग होते हैं, जो उस पेज पे जाते हैं और वहाँ पे इतना टाइम उनका स्पेंड करते हैं। एवरेज टाइम उनका 2 मिनट के करीब होता है। 3-4 मिनट की स्टोरी है, तो हम वी कैन सपोज़ कि जी ये उन्होंने वाक़ई पढ़ी है। तो और ये वाली ऑडियंस तो इतनी है, लेकिन अब इसी कंटेंट की जो विजुअल ऑडियंस है, जो मतलब जिसको सिर्फ विजुअल फॉर्मेट में कंज्यूम करना चाहती है, वो हम उस पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे हैं, वो हमारे इन लाइन है। तो लेकिन उनकी ज़ाहिर है कि एडिटोरियल डायरेक्शन जो है वो यही रहेगी, सॉरी है, वो यही रहेगी। लेकिन हम चाहते जो हैं वो मेनली जो हमारा प्लान है और होपफुली हम बाय नेक्स्ट ईयर उसको हम किसी शेप में देके हम कहीं उसको एक बेस उसका लॉन्च भी कर सकेंगे। वो ये है कि कम्युनिटी सपोर्टेड और कम्युनिटी का मतलब सिर्फ लोकल कम्युनिटीज़ नहीं है, मतलब पूरा डायस्पोरा और सारा कुछ इंक्लूड करके इंडिविजुअल्स बेसिकली हू थिंक कि जी ये जो आप काम कर रहे हैं ये अच्छा काम है एंड आई वांट टू सपोर्ट दिस वर्क। तो उसको आप एक मेंबरशिप प्रोग्राम के ज़रिए आप उनसे करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये रेवेन्यू रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई रखना, उसमें मुस्तकिल एक्सपेरिमेंटेशन करना, ये बहुत ज़रूरी है। और जो प्लेटफ़ॉर्म का जो पैसा है, उसके बारे में एक तो ये कि वो बहुत कम है पाकिस्तान में और दूसरा ज़्यादा बड़ी बात जो है ना, वो ये है कि बहुत फिक्कल है। यू कैन नेवर प्लान। अगर आपको पिछले 2 महीने में आपको $5,000 भी मिल गया है किसी प्लेटफ़ॉर्म से, तो आप चौथे महीने का ये प्लान नहीं बना सकते कि यू विल अगेन गेट 5,000 हो सकता है आप 500 भी ना मिले आपको अगले महीने। और वो तो नहीं आपको कहेंगे कि जी वो आपके कंटेंट में जान ही नहीं है। तो अगर हम उस रेवेन्यू पे जाते हैं तो जिस तरह मैं पहले कह रहा था ना कि आपको एडिटोरियली आप नहीं दे रहे बल्कि आपको प्लेटफ़ॉर्म तय करेगा कि प्रोड्यूस दिस कंटेंट क्योंकि आप ऑडियंस ये माँग रही है। फिर तो वो दूसरी तरफ से हो जाएगा। तो इसलिए इसलिए इसको तो हमने बिल्कुल बाहर रखा हुआ है कि इसको तो हम बिल्कुल इसीलिए सिर्फ़ कर सकते हैं कि महीने के एंड पे टीम जो है ना वो कोई पिज़्ज़ा वग़ैरह मँगा के खा ले। इससे ज़्यादा पैसे वहाँ से मिलते भी नहीं है, ठीक है?
तो लेकिन मेरे ख्याल है कि हाँ सॉरी, इसमें जो रिलेटेड प्रॉब्लम है इसके साथ सबसे बड़ी पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में, वो ये है कि यहाँ पे जो पेमेंट रिसीव करने का जो तरीका है, पेपॉल ना होना, और पेपॉल से भी ज्यादा फिर प्रॉब्लम जो है ये जो FATF और ये वो, क्योंकि फिर यहाँ पे अगर आप इस तरह की डोनेशंस के लिए कोई विंडो बैंक, हमने बैंक से भी काफी नेगोशिएशंस किए हैं, तो अगर आप इस तरह की विंडो बैंक से ले लेते हैं तो, और फिर वो अगर लीगली कहीं सैंक्शनड है, तो उसको फौरन जो है वो कोई और इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, जो कोई जिसपे सिक्योरिटी स्टेट जो है वो आपकी जो है वो एक्शन में आ जाएगी। मतलब कोई अगर मदरसा ही चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दे ऑनलाइन, ठीक है, तो वही वही जो फैसिलिटी ऑनलाइन आपको मिलेगी वही उनको मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है यहाँ पे पाकिस्तान में जो, और मेरा ख्याल है कि अगर ये ना हो, क्योंकि हमने देखा है कि लोग रिस्पॉन्ड करते हैं और पैसे देने में भी हेजिटेट नहीं करते। बहुत सारे मतलब गो के लोकल जो पैसे देने वाले हैं उनकी अप्रोच जो है वो चैरिटी टाइप ज्यादा होती है। हमारी कई स्टोरीज के रिस्पॉन्सेज में लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब जो स्टोरी के सब्जेक्ट थे उनको सपोर्ट कर दिया। अभी हमने कुछ अर्से पहले एक चीचा वतनी की स्टोरी की थी, वहां पे एक रिटायर्ड ओलंपियन जो है वो गांव में विदाउट फैसिलिटीज एथलीट्स को ट्रेन कर रहा है और एथलीट्स के जो है वो जॉगर फटे हुए हैं, और उन्होंने या बेटा जरा पानी देना, और उन्होंने ना उसके ऊपर टेप लगाई भी है। तो वो जब वीडियो छोटी सी चली तो उसके बाद उनको न सिर्फ नाइकी के जूते मिल गए, जॉगर मिल गए, हर तरफ से उनको अच्छी भली सपोर्ट भी मिल गई। तो लोग चाहते हैं, लेकिन ये जब तक कोई विंडो इस तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इस लेवल की पे नहीं हो सकेंगी, तो ये वाला एवेन्यू मीडिया स्टार्टअप्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया. I'll come back to you with a couple of follow-up questions. Sundus, if you could also talk about the plans for experimentation या scaling के हवाले से short term, long term क्या आपके goals हैं, क्या plans हैं, resources किस किस्म के आप employ करने का सोच रही हैं, and in the middle of all of these operational challenges like Tahir Saab has pointed out, whether it's financial, whether it's the fact that आप एक time पे as an independent, as an individual who's running a startup, किस हद तक आप platforms को integrate कर सकती हैं, content formats पे आप कितना वो कर सकती हैं, and also the idea of, and since I saw the kind of content that's on your Instagram right now, I saw that it has a lot of community element to it. So if is the prospect of community based partnerships something that you think is it might be sustainable for you in the medium to long run? Sundar आप म्यूट पे हैं, I think. Can you hear me? I think आपका connection थोड़ा सा break हो रहा है. मेरे ख्याल में उनका कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो गया है. I think I'll just ask her to rejoin. Gee, I think Sundar is back. Right? बस आप उनसे दोबारा अगर रिकनेक्ट कराने की, हाँ मेरे ख्याल में, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही. Okay. जी, I can hear you now. अब आवाज आ रही है, ठीक है. Okay. I think internet का मसला था. All right. So we're talking about scaling and going forward. I mean, we're really small right now. Community element definitely है, but I mean, I think अगर आप वो urban lounge देखेंगे तो it's fairly obvious that it's catering to a particular niche, an English-speaking niche. Ideally, that should be our sustainable way forward. We're targeting sort of rich people-ish. We assume that we're targeting SECA B at least, right? So you've got the SSCA and then you've got the aspirational crowd. थोड़ा बहुत diaspora भी हो सकता है.
But I think if we're looking at local audiences, the problem often is, for want of a better word, it's the lack of maturity in both the audience and the advertiser. Subscription models would be great. The NPR model would be great, like Tahir Saab pointed out. But Hamari audience is not ready to pay for their media yet, I think. And that's where the problem lies in being, in catering to a small niche, right? And that's exactly the problem that we're facing. Again, my background is from audio, and one of our initial ideas was to just do what an actual podcast is, not what podcasts are today, which is like video interviews. But I feel like that is just so difficult to sustain. That kind of content will just not give me the numbers. And our next sort of set of things that we want to invest in is proper video equipment, right? Because video hi bikegi, video hi chalegi, that's the closest thing we will have to virality. uh, the other thing with, particularly with the niche that we have, which is entertainment, music, art, culture, is the recruitment part of it as well, right? So you have a lot of content writers in this field, right? जो blogs लिखते हैं, जो SEO optimized content लिखते हैं, इतने keywords इतनी दफा होंगे, पहला वाला तीन जो है वो इस paragraph में होंगे, so on and so forth. But then with that, I feel like maybe I'm a little bit old school. उसमें एक वो स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट कम हो जाता है, एक जर्नलिस्टिक स्टाइल कॉम्प्रोमाइज होता है. सो फाइंडिंग दैट बैलेंस बिटवीन creating what is a good story and creating what is an optimized story. And that is personally what I feel that we as a baby publication, as a media startup, are sort of struggling with, to let go of our old ways, or finding a sustainable way to incorporate them into what are going to be the new ways of doing business in media. तो ये सारे challenges हैं. But coming back to that thing is that I feel like ठीक है, हम पुराने ज़माने के journalists हैं, so to speak. So there is that के, I shouldn't have to sell my story. That is somebody else's job. And if I'm doing a good story, everybody should be listening. But I feel like we need to put some of this responsibility on the advertiser as well. Our advertisers are lazy. Our agencies are lazy at best, right? They want to go with what is tried and tested. They want to go with channels they have a relationship with. They want to go with sales teams they have a relationship with, right? And that hurts businesses, right? Then you've got, again, specific to my niche, is the concept of these influencers, right? Should we take them seriously? Influencers are certainly not journalists. Are they objective? Absolutely not. And what these influencers have turned into is moving from, say, their niche, which is technology or food or fashion, to now becoming sort of like a moral police, even, right? So an influencer says, "Mere saath ye ho gaya, maine ye kiya." I mean, so many women have spoken up against the experiences that they've had with certain bloggers or influencers. So this online entertainment space has become just really complicated. And I feel like the space for entertainment journalism in Pakistan is just becoming it's becoming hazy at best, for want of a better word. So bahut kafi, it's thick, this space, right? And there's PR agencies working there. There are media companies that are working there, and entertainment reporters, if they are also to make a living, they have to report in the way that they are reporting, which leaves very little room for you to do good entertainment journalism, because it's not going to get you the numbers. तो फिर उसमें क्या करें? हमें, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि क्या मैं सारी उम्र ग्रांट्स के लिए अप्लाई करती रहूं और शायद मिल जाए, कभी ना मिले. So what is our way forward? I mean, I understand that मेरा niche could be, it could give me money soon enough,
but there's just so much competition from people who are not necessarily journalists, from advertisers who don't, this may sound a little bit like moral preaching, who don't take responsibility or don't support good content. You know, they want to place their ads where, you know, in places that sell, right? And within Right. the Instagram space, there's also so much room for numbers that are just downright incorrect, followers that have been bought. And it surprises me that our advertisers are not onto that. The people in charge of the budgets are not onto that. They continue to put money into publications, into people that don't have any verified numbers. So this, if I may, thank you so much. अरसलान साहब, मुझे आप इजाज़त देंगे तो एक सवाल बस मेरा एक follow-up सवाल है तलहा से. But before that, I would just like to add to what Sundar said. Believe me, advertisers and media buyers in the digital space, on the Instagram space, they're aware of the fact कि, you know, influencers कितना चीज़ को convolute करते हैं, और they're aware of the fact कि कितने followers fake हैं, in my experience. But वो जो आपकी वाली बात है कि वो face value जो एक चीज़ है वो Instagram पे बहुत ज़्यादा चलती है. बिल्कुल. And that's a vicious cycle that we are caught up in. और जैसे ताहिर साहब ने भी कहा कि जब आप अपनी फीड पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपको हर किस्म की चीज नजर आती है. लोग एक 5 सेकंड की रील बना के अपना पूरा करियर उस पे बना लेते हैं. एंड देन वी हैव, you know, organizations like Lok Sujag and TCM who spend weeks and weeks on one story, finding the right characters, making sure that the editorial oversight is absolutely intact. So of course it you know, it pushes us to think if it's worth it, considering what our priorities are. एक सवाल है मेरा तलहा से, and then I believe Talha has to run, and वैसे भी we have another 5 minutes. इसके बाद I'll allow Arslan to wrap up. वो ये कि and I understand, I've been seeing a lot of, obviously, consistency in the kind of challenges that we face as an industry, as media startups. And obviously, like Tahir Saab pointed out, कि, you know, financial इतने challenges हैं, you know, audiences को किस हद तक हमें engage करना चाहिए. Do we actually need to ask ourselves कि हमें किस हद तक एक बहुत बड़ी audience की तरफ जाना चाहिए, rather than, you know, targeting the audience that we know is right for us. So Talha, do you think there is room for collaboration between startups, between media owners, maybe some kind of a collective strategy for the digital media space forward? Do you think that is something that we can talk about or assess? Yeah, I mean, definitely, it's a very good question, and I think one of the things which I feel, especially in the digital landscape, उस तरह like, you know, interaction बहुत कम है. I think बल्कि आप लोगों ने the first time ever when I met with all the editors, जी, वो mainstream, बिल्कुल वो mainstream पे हमने किया, exactly. Yeah, so I mean, digital का भी इसी तरह, if we can bring everyone, you know, on one table, like कोई WhatsApp group हो कहीं, like you discuss about the issues, discuss about the topics. And then definitely, I mean, collaboration wise for sure, like, because again, अगर आप वैसे भी देखें globally भी जो collaborations है वहाँ तो बहुत ही paid collaborations within the platform चल रही थी. मुझे याद है कि जब अल जज़ीरा ने AJ Plus launch किया तो उन्होंने Channel 4 के साथ उसको collaborate किया. So there were a lot of stories जो Channel 4 की digital stories थी और AJ Plus की digital stories थी, वो cross post हो रही थी. तो वो they were finding the audiences here and they were finding the audiences there. एंड सेम इन पाकिस्तान, मतलब जो मेरी ऑडियंस है वो प्रॉब्ली किसी और की नहीं होगी, जो किसी और की ऑडियंस है वो शायद मेरी नहीं होगी. कुछ जगहों पे मे बी यू नो ओवरलैप भी कर रही होंगी. So definitely, I mean, collaboration का तो for sure, I think we should definitely work on that. Thank you so much, Talha, for your time. I believe if you need to run, so I think that's okay. हमारे पास वैसे भी अब we're going to wrap up in the next 10 minutes. Arslan साहब, any more questions? Any parting notes? Okay, मेरा सुंदर से एक क्वेश्चन है कि सुंदर, आपने थोड़ी सी बात की थी इन्वेस्टर्स की, कि जब आप ग्रांट के लिए गई या जब आप लोगों से बात करती हैं कि वो आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि वो जब किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो वो अपनी प्रोडक्ट को कैसे सेल करें. बतौर साहब, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि आपने भी कहा कि मैं अपनी स्टोरी क्यों बेचूं, बतौर साहबी मैं भी यही सोचता हूँ, बतौर साहबी ताहिर साहब भी यही सोचते हैं कि मैं अपनी स्टोरी क्यों बेचूं जाके. लोग खुद पढ़े मेरी स्टोरी को, मैंने कितना जर्नलिस्टिक काम किया है, वो खुद उसको देखें. आपको अपना आइडिया कैसे सेल करना चाहिए, आपको अपना आपका टेक अवे क्या था कि आप
जिस तरह आप अपने आइडिया सेल करने गई, तो जो लोग देख रहे हैं अभी उनके लिए कोई 1-2 टिप्स ऐसी कि वो अपना आइडिया कैसे सेल कर सकते हैं? I think what worked for me was that I told my investor that this was about the viewer, the reader, the consumer. I said our focus is going to be the consumer and the reader, and we will wait for the numbers to follow. And I think that is what should, or it did work in my case, works with advertisers / investors, right? If I can sort of tell them that I am aiming for the eyeballs that you want, right? I mean, with donors, it can become specific. Say, for example, if I have, USCFP sponsoring a series on US colleges with me, then I can tell them, okay, I have that English-speaking audience. These are the people you need to talk to. A lot of it, Arsalan, I also felt was, which may sound unprofessional, a lot of it is also investment into the person that is selling the idea, as opposed to the idea itself, right? So if they see you, the main person standing there making the pitch, as someone they can believe in, they will do it. And I think I've felt this time and time again. Sometimes my Angrezi will work for me, and sometimes it will work against me, right? So I think investors and advertisers are interested in, particularly if it's like the single journalist model, or if it's Instagram we're looking at, they're looking for personalities, or even somebody that they want to believe in. If they trust that Muaz is going to make this happen, then they will invest in Muaz. So it's as much about packaging and selling yourself, and I mean that in the best of ways, uh, as it is about the product that you are selling. And we have to find that connection between, okay, I am part of this product. Everything that you like about me is going to be manifested in this product that you're going to see. If you have been used to listening to my Angrezi entertainment radio show on City FM 89, and that's what you miss, then you will get a piece of that on Urban Lounge, right? And I think people are more willing to invest in us as seasoned journalists, as seasoned content producers. Uh, Frankly speaking, there are many other Instagram accounts that are doing what I'm doing. There are many other websites that are doing what I'm doing. But it is sometimes more important what our personal branding is, what our personal sort of network is. And I know that that's possibly not the answer uh, we want to give to young people or to startups, but your own personal standing, your network, your branding is just as important as the product that you're selling, in my humble opinion. ताहिर साहब, आपसे भी यही क्वेश्चन कि आप बतौर सहाफ़ी, आपकी इंटेग्रिटी, आप ठीक है, आपको बिजनेस चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपकी इंटेग्रिटी कितनी इम्पोर्टेंट रहेगी आने वाले दिनों में भी? जिस तरह अभी तलहा ने 2-3 लोगों का नाम लिया कि वो उनमें से 1-2 साहब तो मेरे ख्याल में क्लेम करते हैं वो 3-3, 4-4 करोड़ रुपए कमा लेते हैं महीने का यूट्यूब से। आपकी अपनी इंटेग्रिटी बतौर सहाफ़ी आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आजकल के जो नए यंग लोग आ रहे हैं मीडिया में, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। इन द लॉन्ग रन जो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, आपकी इंटेग्रिटी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बजाय इसके कि आप एक शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने के चक्कर में पड़ जाएँ। योर लास्ट एडवाइस फॉर यंग पीपल जो कि बतौर सहाफ़ी जो है अपने स्टार्टअप्स शुरू करने जा रहे हैं। मैं तो खुद अभी बहुत यंग हूँ, आप कह रहे हैं कि मैं यंग लोगों को एडवाइस करूं। आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है। मेरा स्टार्टअप तो अभी 2 साल पूरे नहीं हुए उसके। बतौर सहाफ़ी। अच्छा, नहीं, मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इसमें जिस तरह सुंदस भी कह रही है ना, इसमें तो पर्सन की अपनी बहुत वो बात है। अब मतलब इसके लिए आप कोई रूल्स नहीं बना सकते या कुछ आप तय नहीं कर सकते कि कौन जो है कहाँ पे किस स्टेज पे जाके किस बात पे फॉल्टर कर जाएगा और कौन जो है वो कायम रहेगा। ये तो हर एक का अपना अपना, कुछ भी कह लें, अपना अपना कैरेक्टर है, अपनी अपनी सोच है, पर्सनैलिटी है अपनी अपनी। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इंस्टीट्यूशन कैसे इंश्योर कर सकता है कि इट स्टेज द कोर्स, तो वो तो उसके लिए तो जाहिर है कि फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी
बड़ी इम्पोर्टेंट है, और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के साथ ये भी है कि जो रिसोर्सेज हैं, आपके रेवेन्यू सोर्सेज जो हैं, वो उनका जो है अगर एडिटोरियल पे इम्पैक्ट जो है या इन्फ्लुएंस जो है वो उतना डायरेक्ट या करप्टिंग नहीं है, तो इंस्टीट्यूशन तो इस तरह गारंटी कर सकता है कि इट स्टेज द कोर्स जो भी उसने डिसाइड किया हुआ है। बाकी मतलब बहुत अच्छा सिस्टम भी बना लें, तो अगर लोग जो उसको चला रहे हैं वो अगर चाहते हैं कि नहीं, अब देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो सब लोगों के लिए है, अब किसी के लिए कुछ डेफिनेशन है, किसी के लिए कुछ डेफिनेशन है, कोई कुछ कह रहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई कह रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये तो थोड़ा रहेगा, ये तो मेरे ख्याल है जनरल फिनोमेना ही है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस की टर्म में तो यही इम्पोर्टेंट है कि इंस्टीट्यूशन जो है वो कैसे गारंटी कर सकता है कि वो स्टेज द कोर्स, वो फाइनेंशियली अगर सस्टेनेबल है, उसमें थोड़ी सी स्पेस, सुकून है, मतलब आपको ये पता है कि आपके बिल्स पे हो रहे हैं, आपका प्लेटफॉर्म खड़ा है और वो चल रहा है, तो फिर ही आप कुछ सोच समझ की बात आगे अपनी चला सकते हैं। अदरवाइज तो फिर आप इसी स्ट्रगल में होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि कोई पता नहीं लगता कब कौन कहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेस करने पे आ जाए। तो वो जो एक्सपीरियंस वाली बात है वो तो ये है कि देखें बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छे, जिन्होंने बहुत अच्छे गुड इंटेंशन से स्टार्ट किए थे अपने अपने जो भी उनके वेंचर्स थे, लेकिन बीच में जाके कुछ गड़बड़ भी हो जाती है, जाहिर है। सही है। थैंक यू वेरी मच संतोष, थैंक यू वेरी मच ताहिर साहब। मुआज, अगर आप कोई एंडिंग नोट देना चाह रहे हैं तो। नहीं, आई थिंक इट्स बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन रही है सबकी तरफ से। आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक सुंदर संताई साहब एंड तलहा आल्सो फॉर योर टाइम। और एंड लाइक आई सेड, एक चीज जो इसमें से हमने एक तरह से उस पर ज्यादा हम उस पर टाइम नहीं दे सके, बिकॉज ऑब्वियसली वो ऑर्गेनिकली वो डिस्कशन वाज टेकिंग इट्स ओन वे। एक तो ये कि हमारा जो मीडिया सस्टेनेबिलिटी और वायबिलिटी पे काम है, दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द रिपोर्ट दैट वी लॉन्च इन मे। ये जो हमारी इस पे जो स्टार्टअप्स वाली जो रिसर्च है। Secondly, when that comes out, hopefully we will try to have a follow-up session, and obviously there have been some talking points here that we would like to take up with you people again in the future. So hopefully we can find more avenues of collaboration in the future also. So thank you so much for your time, everybody. बहुत शुक्रिया. Thank you. Allah Hafiz. Thank you so much. Allah Hafiz. ओके जी, अल्लाह हाफिज।